afternoon and namaste. I, Anand Maitre, heartily welcome you all to the series of invited talks by our promising alumni organized by Gujarat University Botanical Society GUBS and Gujarat University Learned Alumni of Botany GULAB. We have with us our distinguished resource persons, Dr. Maulik Gadani from Department of Biology at St. Xavier's College, Gujarat University, and Dr. Gurul Jani from Department of Biology at Government Arts and Science College, Gujarat University. Faculty members of the department, Archana ma'am, Solanki sir, Maitre sir, Modi sir, Soumya sir, and dear participants. It is indeed a pleasure to have you all with us here. Gujarat University is on a fast track of progress. We are proud of our university, and as a mark of respect, let us rise for our university song. वंदन अभिनंदन वंदन अभिनंदन वंदन अभिनंदन वंदन अभिनंदन वंदन अभिनंदन गुजरात यूनिवर्सिटी आपणी गुजरात यूनिवर्सिटी आपणी विद्यातणु तपोवन वंदन अभिनंदन वंदन अभिनंदन वंदन अभिनंदन वंदन अभिनंदन राष्ट्र चेतना कला साधना खेल भावना विकसे विश्व मानवी बनी गुजराती विश्व सकल માં વિલસે સ્નેહ સંપ સહકારની સાથે દેતી તું સન્મતિ સૌના સાથને સંગાથે સૌ સિદ્ધ કરે ઉન્નતિ પ્રેમ બંધુતા સમાનતાના પલ પલ પ્રસરે સ્પંદન વંદન અભિનંદન વંદન અભિનંદન वंदन अभिनंदन वंदन अभिनंदन वंदन अभिनंदन वंदन अभिनंदन वंदन अभिनंदन I request Archana ma'am to formally welcome our guests. Thank you, Anil. It's indeed a pleasure to welcome you all here for the invited talk on Flora Challenges of Digitalization. It's our proud privilege to acknowledge our Honorable Vice Chancellor, Professor Himanshu Pandya, who is an embodiment of courage, perseverance, and has been the guiding force for students and staff alike. We are very proud of the 5-star rating by GSIRF and once again for the third time emerging as the only state university in the top 100 University of India in NIRF ranking 2022. All this speaks volumes of the vision of our dynamic Vice Chancellor, Professor Himanshu Pandya. We welcome our distinguished resource persons, Dr. Maulik Gadani and Dr. Goral Jani. Both of them have been our students and we are very proud of their academic achievements. I also welcome my colleagues in the department, Professor Hitesh Solanki, Professor Bharat Maitre, Dr. Nainish Modi, Dr. Soumya Patel and all the participants. My first experience as a botanist has been to know the names of plants. Taxonomic nomenclature aids in plant identification and ultimately their classification. But much more remains, and that is documenting this expanse of knowledge as a flora or a manual. Digitalization of information has been very interesting and challenging. Today, we have experts who had this challenge, they have taken up this challenge and completed this mammoth task for the Forest Department in Gujarat. I once again welcome both of you, Maulik and Gorul. We look forward to a great learning experience. Thank you. Thank you, ma'am. Our Honorable Vice Chancellor, Professor Himanshu Pandya, is in another meeting and has conveyed his blessings for this webinar. Our Registrar, Dr. P.M. Patel, is also in a meeting and has conveyed his best wishes for this webinar. Now we shall start with the technical session.
We have with us our distinguished resource persons, Dr. Maulik Gadani and Dr. Goral Jani. Both are our alumni and we are proud of their achievements. Many of us have been their students and are immensely grateful to them for guiding and mentoring us. Dr. Maulik Gadani was awarded PhD in 2005 and since then he has had a remarkable academic career with many publications to his credit. Above all, he was sanctioned the research project by Gujarat Forestry Research Foundation. The project was about the electronic documentation of the plants available in the Gandhinagar city. The completed finished result of the project is available in the form of a website on the internet at the URL www.efloraofgandhinagar.in with more than 12 lakh hits. Dr. Goral Jani was awarded PhD in 2011 and since then she has had a wonderful academic career with many promising publications and awards. Teaching has been her passion, but more than that, her help in this project on eFlora is noteworthy. Her creative interest had earned her many laurels when she was studying here in the department. Even now, she is pursuing Visharad in Kathak. We are delighted to have both of you with us. Thank you both for joining us in this series of online invited talk organized by GUBS and GULAB. I request both of you to deliver your talk on eFlora challenges of digitalization. Thank you so very much. Thank you, Anil, for these wonderful words. Okay, I'll share the screen first. Okay, is the screen visible? Is it visible, please? Hello, is the screen visible? Hello. Are we audible? Yeah, you are. Please Okay, continue. Yeah. okay. Thank you, ma'am. Uh, so, like it's been said, we are here to have a talk on Yes. eFlora challenges of digitalization. It is more of a talk, more of like our own experience, our own journey that we had been through. Uh, so let's get started first. See, flora is something that everybody knows. We know that what is a flora. Flora is like uh, basically the plants which are found in a habitat in an area or a region. That is what we understand flora as. Now, when it came to documentation, initially we used to document the plants in form of thesis, in form of reports, in form of say a research article. That is how our journey used to be. And slowly and gradually, as the changes started happening throughout the world, uh, this this part this thing internet, which has taken hold everywhere, and even the kids nowadays, they are more very much comfortable with the internet than our generation. So the need was there that we have this flora in a form which is digitally available to everybody throughout the globe. So that led to the concept of e-flora. So basically the same thing, but is available as an online resource. We used to have a description of the plants in books and all, their characters, their points of identification, keys, partial or complete, in the forms of various floras, like for example to a botanist flora of Gujarat, Cook's flora. These are certain known floras. So that was there. But then
Slowly and gradually, it was taking a shape in the form of electronic thing. So we thought about this topic that documentation is needed. Anyways, if I talk, say, 10 years back, that time the documentation of the flora of Gandhinagar was anyways needed. So we started, that was our first step. We started with that. We started documenting the flora of Gandhinagar. Slowly and gradually, we realized that there were certain issues that we faced. And we thought of why not having it in an electronic form. Now, the reason behind this very thought, that why we need electronic documentation, uh, I would like to highlight upon certain challenges sorry, that a traditional system faces. आई वुड से ये एक ऐसी बात होती है कि जब कोई बॉटनिस्ट अगर है, इधर उधर किसी को, नेबर्स को, सबको पता है कि अगर कोई स्टूडेंट है जो बॉटनी पढ़ रहा है, तो समटाइम्स दे वुड कम विद अ प्लांट एंड से कि ये बताओ ये क्या है, एंड वहीं से बात शुरू हो जाती है. If it is a common plant, very much familiar, so it becomes very much easy even if it is in not flowering state. Easy hota hai. But what if it is in not flowering state? Sometimes lookalikes kind of थोड़ी परेशानी होती है. और if we are not able to answer their question, they would say कि अरे इनको तो कुछ आता ही नहीं, चाहे प्रोफेसर हो गए या स्टूडेंट हो गया. तो वहीं से हमारा सर्टिफिकेट हो जाता है. बट द पॉइंट इज, इट इज रियली वेरी मच डिफिकल्ट व्हेन वी कम अक्रॉस अ प्लांट, दैट टू इन नॉट फ्लावरिंग स्टेट. हमारी हालत ना अलग अलग फेजेस से गुजरती है. अगर फ्लावर नहीं है, पहले देखेंगे, थोड़ा क्लोजली देखेंगे, मैग्नीफाइंग लेंस लेके देखेंगे कि क्या कैरेक्टर्स हैं, whether these characters they match to something which is known, and we can come to a conclusion. कभी कभी बहुत ज़्यादा confusion हो जाता है कि अरे ये है या ये है, दिमाग चकराने लगता है. We actually face these type of problems when we come across a plant. I would say it is not always the case, but sometimes it is. अब ये आज का तो इशू है ही नहीं. लाइक बॉटनिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ बॉटनिस्ट को ही ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी है. लेट मी टेक यू बैक टू सम डिकेड्स बैक, सेंचुरीज आई वुड से. अगर हनुमान जी को ये प्रॉब्लम हुई थी तो हम तो मतलब हमें तो हो ही सकता है. उनको भी पूरा का पूरा पर्वत उठा के लाना पड़ा बिकॉज ही कुड नॉट आइडेंटिफाई कि संजीवनी बूटी कौन सी है. तो अब ये बात होती है, जस्ट इमेजिन, हमको ये दिमाग में आया कि वी वर जस्ट डिस्कसिंग लाइक दैट, एंड ऐसे ही हंसी मजाक में हमको यूं लगा कि जरा सोचो, अगर उस जमाने में हनुमान जी के पास सपोज मोबाइल होता या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी होती कि वो देख के कंपेयर कर पाए कि अच्छा ये इतनी सारी जो चमकती चमकती जो प्लांट्स हैं, जड़ी बूटियां, इनमें से ये है जो मुझे लेके जानी है, तो उन्हें शायद पूरा पर्वत उठा के ले जाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती. तो फिर अगर सर ने कहा कि अगर मान लो कि वीडियो कॉलिंग हो सकता, तो वो वीडियो कॉल करके बता के चले बताएं कि चलो इन सब में से कौन सी है. तो वी वर जस्ट ऐसी, वी वर हैविंग लाइट मोमेंट्स, बट दैट क्लिक्ड के बात तो सही है कि अगर हमारे पास फील्ड में ऐसा कोई सोर्स हो जिससे हम कंपेयर कर पाए तो दैट वुड बी ग्रेट. सो अब ये क्यों, रीजन बिहाइंड दिस इज कि व्हेन वी एक्चुअली गो टू फील्ड, तो होता ये हमारे पास एक ही सोर्स रहा होता था कि या तो हम बुक्स रेफर करते थे, यानी कि जो अपना ट्रेडिशनल फ्लोरास वगैरह हो गया तो हम उसको फॉलो करते थे. दूसरा कि बुक्स तो अवेलेबल थी, बट देन इशू क्या होता था, ज़्यादातर तो डायग्राम्स होते ही नहीं थे, फोटोग्राफ्स तो बहुत दूर की बात है. बहुत शुरू शुरू में इफ़ आई टॉक ऑफ सर्टन बुक्स,
very pretty much back. So they used to have some sketches, drawings, that to black and white. फिर थोड़ा अगर एडवांसमेंट आया तो उसमें कलर्स होने लगे, बट फोटोग्राफ्स बहुत कम हुआ करते थे, जब होते भी थे तो ब्लैक एंड व्हाइट में होते थे. नाउ आई नीड नॉट एक्सप्लेन व्हाई एंड व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ कलर, क्योंकि एक अगर रोज ही है तो जस्ट बाय लुकिंग एट ब्लैक एंड व्हाइट डायग्राम वी कैन नॉट से व्हाट कलर इट इज ऑफ. पर अगर उसके सामने कलर डायग्राम है, फोटोग्राफ है, तो वी कैन इजीली मेक आउट कि ओके चलो ये इसका कलर ये है. वी डोंट नीड वर्ड्स इवन. तो दीज आर सर्टन चैलेंजेस दैट वी यूज्ड टू फेस. तीसरा था कि हमारे पास रेफरेंस बुक्स होती थी. समटाइम्स वेरी वंडरफुल ट्रेडिशनल रेफरेंस बुक्स यूज्ड टू बी आउट ऑफ प्रिंट. तो दिक्कत होती थी कि चलो सो एंड सो फ्रेंड के पास से बोरो किया, उनसे लेके आए, फोटो कॉपी करवाई. तो it was not that very much easily available. Sometimes, not always, but sometimes that was again an issue. I faced a lot of difficulty for getting the some Flora of Saurashtra. Okay, even the Flora Gujarat by GL Shah, that is also out of print, and it was printed in something in the 60s, and after that no revision of the work even. So recent naming all these things is not you cannot get it from that Flora. तो वो भी वहाँ पे एक लिमिटेशन रहा करता था. दूसरी चीज ये रहती थी कि पुरानी बुकें जो कुछ किताबें हो गई है, जो मुश्किल से मिली है, तो उसको इतना संभाल के यूज करना पड़ता था. व्हेन यू फोल्ड द पेज ना, इट विल टेयर ऑफ, तो वो टुकड़ा होके बाहर आ जाता था. तो वो भी बहुत दिक्कत रहता था वहाँ पे. दैट वी हैव पर्सनली फेल्ट इट. एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या होता है कि रिविजन भी जरूरी होता है. कुछ प्लांट्स थे जो तब थे अब नहीं है, या जो नहीं थे कुछ अगर एग्जॉटिक वैरायटी है या कहीं से आया है या एनीथिंग, ऑलवेज देयर इज अ नीड ऑफ रिविजन ऑफ वर्क पीरियोडिकली. तो कई बार ये भी होता था कि वी थॉट दैट देयर हैज टू बी रिवाइज्ड वर्क व्हिच इज नीड ऑफ द आवर. Now, I personally feel that I always say that texts are good, no doubt. हमारे पास जो कोई भी कंटेंट है, पैराग्राफ है, पढ़ने में अच्छा लगता है. वी कैन हैव अ वंडरफुल इमेजिनेशन कि जस्ट एक टेक्स्ट को लिख के वी कैन क्रिएट वर्ड पिक्चर जो हमारी खुद की इमेजिनेशन होती है. बट व्हेन इट कम्स टू अंडरस्टैंडिंग, तो इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव फोटोग्राफ्स, visuals, just some short clips, because it is scientifically proven that they have more impact. We learn much more as compared to learning from the text. I don't say that text is not important, but I would just like to highlight upon a point, upon this point, by giving an example of, say, suppose I am saying कि bi-lipped corolla. So there are so many flowers which will have that bi-lipped corolla, but their form, their shape, their structure, it would be more explanatory if we have a photograph of the same. So that creates a difference. And even in this, I got this picture wherein they have explained that 65% of individuals, they learn best through visual means. And I personally, I have also experienced this. I remember more through charts, more through diagrams, and it is really very much easy. So in a way, I would say that sometimes words, they have a limitation which can be overcome by proper visuals or photographs. They have more impact rather. Next point that we faced personally, that initially when we had to say identify a plant or something, either we used to carry large amount of books to the field, क्योंकि always it is not possible to get the plant to the laboratory. Sometimes it is more appropriate to get it identified there. तो अगर ऐसा करना है तो हमें काफी सारी बुक्स कैरी करके जाना होता था. तो दैट इज अगेन अ लिमिटेशन ऑफ द ट्रेडिशनल सिस्टम. अगर प्लांट को हम लेबोरेटरी तक लेके आते थे तो कई बार उसकी कंडीशन बहुत डिटीरियोरेट हो जाती थी कि उसका जो शेप है वो शेप
फ्लैटेंड, एक 2D में आ जाता था, जो हमें 3D में देखने को मिलता है फील्ड में, वो 2D में हो जाता था। कई बार मॉइस्चर कंटेंट है, तो मॉइस्चर कंटेंट भी जैसे थोड़ा सा फ्लैशी मटेरियल है, तो इट्स डिफिकल्ट फॉर प्रेसिंग देम समटाइम्स। एंड so in a nutshell, there are so many parameters, they get suffered. Even, in case of the spiny twigs and spiny structure, and it is very difficult to carry along with you till to the home or to the laboratory. And स्पाइन जो होते हैं वो चूक जाते हैं, इवन बैग जो होती है उसको भी फाड़ देते हैं। समटाइम फ्रूट्स दे आर वेरी आइडेंटिकल इन सम ऑफ द प्लांट्स, तो वहां पे फ्रूट आप जो है ना, उसको कैरी करने में समटाइम वो लीचिंग आउट होता है, वो भी इश्यू रहता था कि सुबह में कुछ कलेक्ट किया और शाम को लेके आएंगे, क्योंकि उतना टाइम तो पूरा फील्ड में करेंगे, तो उस टाइम पे भी वो बहुत डिफिकल्टी होता था। तो ये सारी कुछ ट्रेडिशनल सिस्टम की चैलेंजेस थी। फिर बात आई हर्बेरियम पे, कि कई बार हर्बेरियम हम बना लेते हैं, पर हर्बेरियम के भी अपने खुद के कुछ इश्यूज हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे हमने हर्बेरियम बना लिया, लेंथ उसकी काफ़ी है, तो जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, उसको काफ़ी मोड़ माड़ के एक छोटे से पीस में उसका स्टैंडर्ड साइज में हमने फिट किया है। लेकिन अगर इसी चीज़ को हम नेचुरली देखते हैं, यू कैन see the difference between the two flowers. The difference of 2D and 3D, of course, it is very evident here. Like sir said के spiny structure है, तो ये सब issue होता है। मान लो हर्बेरियम बना भी ली, तो अगेन आजकल काफ़ी सारी जगहों पे अच्छे अच्छे हर्बेरियम्स मेंटेन्ड स्टेट में रहते हैं, पर उसके पीछे बहुत मेहनत लगती है। लाइक फॉर एग्जांपल, मर्क्यूरी क्लोराइड का ट्रीटमेंट उसको देना, जो इटसेल्फ हार्मफुल होता है, काफ़ी हेल्थ हैजार्ड उसमें रहता है, तो ध्यान रखना पड़ता है। वी हैव टू बी रियली वेरी मच केयरफुल वाइल हैंडलिंग देम। इवन हर्बेरियम शीट्स, दे नीड टू बी really maintained with great care, otherwise some part may get damaged, some character, important character may get missed out. तो ये सारे issues भी रहते थे। Of course it is good, but then we thought of why not having a system which say for example overcomes these traditional challenges। अगर कुछ ऐसा हो सकता है तो, लाइक सर ऑलरेडी सेड कि पुरानी बुक्स के ये सब इश्यू रहते हैं, मॉइस्चर लग गया तो इट गेट्स डैमेज्ड, पेजेस आफ्टर सम टाइम दे गेट येलो टोन्ड समटाइम्स, तो ये इन इटसेल्फ एक चैलेंज है। बट आज हम लोग क्या करते हैं, आज हम पीडीएफ बना लेते हैं, विच गेट स्टोर्ड फॉर मच लॉन्गर टाइम, rather much better as compared to original books. So with these challenges that we faced initially while moving in the field and while documenting the plants initially at the ground level, preliminary level, we thought of why not having something, कुछ ऐसा हो कि जो हमने फेस किया, जो हमने चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स हमने जो फेस की, वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए ऐसा ना हो, या काफ़ी कुछ हम कुछ हद तक हम उसको सॉर्ट आउट कर सकें, कुछ उसका सोल्यूशन हो सके। सो दैट वेरी आइडिया led to the final product which you all can see, that is in the form of www.efloraofgandhinagar.in. This is how the website is available. It's available in this form. We would like to thank Gujarat Forestry Research Foundation at this moment, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट था इसका फंडिंग इनिशियली हमें गुजरात फॉरेस्ट्री रिसर्च फाउंडेशन से मिला था, एंड इट वाज अ प्रोजेक्ट व्हिच वाज डन a few years back. Okay, now this is the home page of the website. It contains roughly information of 721 plant species along with the photographs. हमने जो महसूस किया, लाइक आई सेड, कि हमें ये लगा कि अगर फोटो होता तो कितना अच्छा होता, तो वो जो चीज़ हमें थी वो हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की. So what we have done is we have
this is the home page wherein you will find that there are some thumbnails here at the base, wherein these thumbnails they basically are for the plant forms. कि अगर किसी को इतना पता है कि ये कोई ट्री है, so he would click upon this thumbnail of tree and then a list along with the photographs would come in, pop up. तो फिर वहां से वो मैच करके काफी हद तक उस प्लांट तक पहुंच सकते हैं, उसके साइंटिफिक नेम तक पहुंच सकते हैं. So this is how it is. ये थोड़ा enlarged view है wherein though it is very much self-explanatory, we thought of designing these tabs, thinking keeping in view के ये जो वेबसाइट जब बने तो एक बॉटनिस्ट भी यूज कर सके. हमने यहाँ कॉमन नेम्स का भी टैब रखना चाहा है कि जिससे कि जो जिसे सिर्फ ये पता है कि शू फ्लावर, तो उसे सिर्फ शू फ्लावर से एक प्लांट को उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो भी वो कर पाए. जिसको पूरा लिस्ट देखना है तो कंप्लीट लिस्ट भी हमने रखा है. दिस इज हाउ वी थॉट ऑफ डिजाइनिंग द वेबसाइट. ऑल्सो वी हैव प्लेस्ड अ टैब ऑफ प्लांट फैमिलीज के कई बार बॉटनिकल पर्सन जो होते है ना, तो बॉटनी स्टूडेंट्स, बॉटनिकल पर्सन, दे आर लिटिल बिट, दे हैव मोर नॉलेज अबाउट द प्लांट, है ना, कि उसके अंदर इस तरह से क्लासिफिकेशन होता है, ये फैमिली, उसका फैमिली का उसको कैरेक्टर पता है लेकिन जीनस स्पीसीज का उसको आइडिया नहीं है. तो वहां पे जाके वो पूरा लिस्ट आउट देखेगा, एक के बाद एक प्लांट्स को चेक करता जाएगा और उसके अंदर उसके फोटोग्राफ भी है ना. तो एज सच वो ट्रेडिशनल सिस्टम के अंदर आपको की देखना पड़ता था, उसके अंदर मेजरमेंट और मिलीमीटर के अंदर कि इतना उसका लेंथ है, इतना साइज है, इतना डायमीटर है, ये कलर है ना, वो सब कुछ उसको उसके अंदर टर्म के अंदर कुछ जाने की जरूरत नहीं, सीधा फोटोग्राफ के साथ मैच करे विजुअल इफेक्ट और वो आइडेंटिफाई कर सकता है. Yes. तो ये कंसेप्ट हम लोगों ने यहाँ पे चाहा था. और नॉन बॉटनिस्ट पर्सन के लिए भी, जो भी नॉन बॉटनी पर्सन है उसके लिए भी यहाँ पे कॉमन नेम हम लोगों ने रखा है. जितना हो सके उतना ज्यादा डालने का ट्राई किया. कॉमन इंग्लिश नेम को हमने वेटेज दिया है, कॉमन लोकल नेम गुजराती में क्या बोलते हैं उसको, वो भी यहाँ पे डालने का ट्राई किया. और हिंदी में अगर मिलता है वो, उसके अलावा भी बहुत सारे लैंग्वेज के अंदर होता है, लेकिन फिर वो वहां पे थोड़ा लिमिटेशन हम लोगों का है क्योंकि एक पेज के ऊपर हम लोगों को कंटेंट फिट करना था, उससे ज्यादा इलोबरेट नहीं करना था. बाकी बार गवे बोली बदलाय એવું ગુજરાતીમાં કહેવત છે, એટલે જેવો થોડા ડિસ્ટન્સ ઉપર જઈએ તો બીજું નામ આવી જશે એજ પ્લાન નું. તો वो वहां पे एक लिमिटेशन रहा है. अदरवाइज वी हैव ट्राई टू मैनेज ऑल द मैटर इन द वन पेज. ऑल्सो कभी कभार क्या होता है, लाइक सर के साथ कई बार होता है, ही वुड से सी अ प्लांट एंड सेड ये फैमिली का है, बट देन फिर वो जनरा एंड स्पीशीज तक जब पहुंचना होता है तो फिर थोड़ा होमवर्क लगता है. सो वो भी एस्पेक्ट को ध्यान में रख के वी थॉट ऑफ व्हाई नॉट हैविंग देम ऑर्गेनाइज्ड इन प्लांट फैमिलीज फॉर्म ऑल्सो. तो एक टैब हमने वो भी ऐड किया था. ओके, this is just another slide wherein these thumbnails are being shown. Now, like we said, that to a botanist, if a botanist is there, he knows कि चलो a shoe flower is there. He would know that this is hibiscus rosa sinensis. So उसको सिर्फ उसकी information चाहिए. What he would do is he would simply type hibiscus rosa sinensis in the search box, and when he or she does this, this is how the search result would be shown. So here, as you can see, the name is there, scientific name. Below that, there are these, say, local names. They are there. We have tried to, like sir said, we have tried to include as much as we could. So now when this is clicked upon, another page opens wherein the information would be displayed. That slide is coming up. So say for example, अगर ये पता है कि हिबिस्कस है एंड उसकी कितनी स्पीशीज अवेलेबल है, suppose we want to find out that, then he or she would just simply type hibiscus and all the species would be displayed like this. This is how the search result would look. अब suppose like hibiscus rosa sinensis पे क्लिक किया, तो we have tried to put the information in the form that first botanical name is displayed, कि जो अभी recent उसका finally accepted name जो है वो हमने रखा है.
from various sources, if we could get some information about the name, like hibiscus, which is derived from Greek word, तो ऐसा जो कुछ भी हमें information उसके related मिला during our content hunt, so we have tried to include that here. Common names as much as we could put, family name, फिर उसका form, yes. Now this is an area where जहाँ हमने इस प्लांट का अकरेंस रखा है, एज इन हमें कहाँ पाया जाएगा, वेयर कैन वी फाइंड दिस हिबिस्कस इन द सेक्टर्स पर्टिकुलरली, एज वेल एज इवन इन सर्टन स्पेशल एरियाज, क्योंकि गांधीनगर इतना बड़ा सिटी है जहाँ कुछ एरियाज हैं दे आर विच आर वेरी वेल कंजर्व्ड, तो वी थॉट ऑफ कीपिंग देम सेपरेट and also documenting their flora separately in separate tabs, and below that you will find information about the plant. ये आधा है, it is still there, which you can get from the website. Now for example, if a layman is there, तो अगर लेमन को ज्यादा कुछ पता नहीं है, सपोज उसको कौरवपिता या कैलाशपति ही पता है, whichever he knows, he would simply go to this common names tab and would in this search box he would type the local name. हमने ये भी ट्राई किया है कि जैसे अभी हम गूगल पे या यूट्यूब पे हम सर्च करते हैं, तो ऑटोमेटिक कंप्लीशन का जो टैब है, वी हैव पुट दैट आल्सो, सो ऑन इट्स ओन इट वुड स्टार्ट सजेस्टिंग. If you type H, so it will show whichever matches. If you type HIB, then list would come up like that. So we have tried to keep the website in to that level. Now this is how the information is displayed. Here you can see that there are photographs here on the right hand side. Now I would like to mention that all the photographs he has taken on his own, हर जगह खुद लिया है, जिसके लिए मुझे पूछो कि क्या क्या हमने पापड़ बेले हैं कई बार, तो वी हैव टू लिटरली क्लाइम ऑन ट्रीज, या उसको प्लांट का जो ट्विग होता है उसको थोड़ा बेंड करो, मैं पकड़ के रखूं, सर फोटो क्लिक करेंगे, एंड ऑफ कोर्स वो इटसेल्फ एक चैलेंज था, वो हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद. बट देन वी हैव ट्राइड टू टेक फोटोग्राफ ऑफ ऑलमोस्ट ऑल दी पार्ट्स. जैसे फ्लावर हो गया तो फ्लावर का लिया, स्टेम का, ब्रांच का, तो we have tried to take photographs of almost as much as we could. Now when you click on the photograph, that will show an enlarged view. इस तरह से एक जो फ्लावर अगर है, आपको सिर्फ फ्लावर का डिटेल देखना है, तो उसको इस तरह से इसका आप फोटो एनलार्ज करके डिटेलिंग भी देख सकते हैं. Leaves देखना है तो we have taken photograph of leaves separately, so that their form, try to even take care that if it is hairy, so that is also found in the photograph, so that it becomes easier for the person who's referring. Similarly, this is another example wherein Butea monosperma, the form is being shown. उस पे अगर क्लिक करते हैं उसकी लीव्स. सिमिलरली फ्लावर में भी एनलार्ज्ड व्यू जितना हो सका है हमने मैक्रो लेंस लगा के इसका फोटो लिया है, सो दैट ये और डिटेलिंग उसमें दिख सके. ओके, नाउ अब ये जो सारी, ये हमने जो फाइनल फॉर्म तक इसको लेके गए, इस दौरान we have faced many hurdles. There were many challenges. At each and every step, there was a different challenge. So we have categorized our challenges into two zones. First is the challenges that we faced during field work. Field work का हमारा experience बहुत अलग था. ये जो फोटो हमने रखी है, ये इसीलिए रखी है कि हमारी हालत ऑलमोस्ट कुछ ऐसी होती थी. हम लोग हमेशा जब भी हमारा डॉक्यूमेंटेशन के लिए हमने जो दिन अलॉट किया है, उस दिन सुबह से सनराइज होने के साथ साथ हम भी निकल पड़ते थे.
अलग अलग एरियाज, अलग अलग जोन्स में हम जाया करते थे ना, ऑलमोस्ट पूरा दिन वहीं बिताते थे। तो ऑलमोस्ट हमारी कुछ कंडीशन ऐसी ही थी। And the second type of challenge that we faced after documentation, that was technical difficulties. वो भी एक पूरा different experience. And As we are botany students, at that time, this web coding and software related, all the computer related, internet related, जो भी जितनी भी डिफिकल्टीज थी, यानी हम लोगों के लिए जस्ट थंबनेल उसके जैसा ही था, हम थंबप्रिंट जैसा ही, हमको कुछ नहीं पता था। जब वो बंदे ने बताना शुरू किया है ऐसे करना है ऐसे करना है, पहले तो हम लोग ऐसे ही उसको देखते रहे, क्या बोल रहा है भाई, कौन सी लैंग्वेज में बोल रहा है। हमारे लिए वो था, क्योंकि बॉटनी वी आर नोइंग, लेकिन उसको ट्रांसफॉर्म इसके अंदर करना है, वो हमारे लिए बहुत ही लर्निंग भी था हमारे लिए। Yes. कि ये किस तरह से वो लोग कर रहे हैं। also one more thing कि हम जिससे डील कर रहे हैं वो नॉन बॉटनिस्ट है, वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट है, बट हमें उससे जो चाहिए, जिस फॉर्म में चाहिए, वो एकदम करेक्ट होना चाहिए। उसके साथ साथ हमें टेक्निकल एस्पेक्ट्स का कुछ पता नहीं था, उसको तो थोड़ा बहुत बॉटनी हमें पहले सिखाना पड़ा, और बॉटनी का ट्रेडिशन ये इस तरह से रिप्रेजेंटेशन इसका होता है, तो वो हमको उसको सिखाना पड़ा। yes. फोटोग्राफी के अंदर, टाइपिंग के अंदर, क्योंकि हमें पता है कि जो साइंटिफिक नेम होता है वो इटैलिक के अंदर होता है, उसके पीछे उसका जो होता है वो ऑथर ने ऑथर साइटेशन, तो वो भी उस तरह से हमें लिखना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हमको उसको बतानी पड़ी। तो वो एक काफी डिफरेंट एक्सपीरियंस और डिफरेंट चैलेंज था। तो हमने हमारी चैलेंजेस को 2 जोन में कैटेगराइज किया है। लेट अस फर्स्ट टॉक ऑफ फील्ड वर्क चैलेंज। वैसे तो टू अ बॉटनिस्ट ये कुछ नया नहीं है, हर बॉटनिस्ट को काफी काफी कुछ एक्सपीरियंस हुआ ही होगा, कहीं ना कहीं हम फील्ड वर्क पे गए ही होंगे। एक्सकर्शन टूर्स आर पार्ट ऑफ आवर स्टडी, सो वी नो व्हाट इट इज। बट आई विल स्टार्ट विद सेइंग दैट कि जब हमने शुरू किया काम, तो हमारे सामने था पूरा गांधीनगर सिटी। तो द फर्स्ट थिंग दैट वी थॉट ऑफ इज वी नीड अ प्रॉपर प्लान, जो बहुत ज़रूरी है। एनीवेज प्लानिंग के बिना कहीं कोई टास्क कंप्लीट नहीं होता, बट देन वी हैड अ टाइम स्पैन जिसमें हमें करना है। ऑल्सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ द प्लांट्स विच आर एनुअल्स, सीजनल प्लांट्स, एंड 30 sectors in front of us. Also some special स्पेशल zones. एरियाज हम लोगों ने कलेक्ट करना था, क्योंकि ये जैसे इंद्रा उद्यान है, आरण्य वन है, पुनीत वन है, सरिता उद्यान है, सो पेरिफेरल एरिया आल्सो वी हैव टू मैनेज। So basically the first challenge was large study area which we had picked up. तो उसके लिए हमें काफ़ी अच्छा प्लानिंग की ज़रूरत थी। सेकेंड चैलेंज हमारे सामने ये था दैट वी वांटेड that whichever plant we are documenting, we were also interested in the state, as in phenology. Like we say that phenology is what? It's a living calendar of the plant, right? Okay, the periodic events through which it goes. प्लांट सीडलिंग स्टेट में होता है, फिर वहाँ से वो जर्मिनेट होके वेजिटेटिव स्टेट में आएगा, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग। एक पीरियड ऐसा होता है जैसे जनरल फ्लावरिंग पीरियड कहा जाता है। तो वेरी almost say all the plant species would be say in flowering state या fruiting state। तो ये जो पूरे periodical events थे, इसके ये भी एक पार्ट था। तो इसके लिए हमारा चैलेंज ये था कि हमें हर एक प्लांट का, कोई भी प्लांट जो हमने इसको रिपोर्ट किया, विच एवर प्लांट वी हैव डॉक्यूमेंटेड दैट इट इज देयर इन गांधीनगर सिटी, इट इज नॉट जस्ट just for the sake of documentation. We had to monitor it frequently, so frequent visits were required. Then and then only we would come to know that it is during which months it would be in flowering state, during which months it would get into the fruiting state. So that was our again it needed a good planning, and that was again a challenge for us. तीसरा चैलेंज फोटोग्राफी, ये सर का जोन है। एक्चुअली इसके अंदर बहुत यानी आपके पास आप शब्द से काम लेना पड़ता है, क्योंकि फोटोग्राफी वो बहुत ही, यानी आपको एक स्टिल इमेज लेना है,
है ना, और उसके अंदर भी डिटेलिंग आपके पास होना चाहिए। और मेरा ये था कि जितने भी प्लांट के स्टेजेस हो, वो जितने मैक्सिमम स्टेजेस में फिनोलॉजिकल रहता है, हर एक का मैं फोटोग्राफ क्लिक करूँ। तो पर्टिकुलर स्टेज के लिए मुझे उस टाइम पे जाना पड़ता है। कभी कभार कुछ प्लांट के अंदर अगर कोई स्टेज पर्टिकुलर बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है, कुछ के अंदर फ्लावरिंग, कहीं के फ्रूटिंग, तो वो अगर ओवर हो गया तो मुझे नेक्स्ट ईयर, आफ्टर द 1 ईयर, आई सपोज टू वेट फॉर दैट पर्टिकुलर स्टेज। तो वो चीज एक रहता था। सीजन में यानी कुछ ट्री होते हैं, पेरेनियल होते हैं, लेकिन उसका सीजनल रहता है, तो वो पर्टिकुलर सीजन के टाइम पे मुझे उसका बार बार उसका फ्रिक्वेंटली विजिट मुझे करना पड़ता था। टाइमिंग ऑफ द फोटोग्राफ, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज आई फेल्ट इट कि कुछ पर्टिकुलर जो टाइम होता है उसके अंदर आपको एक पर्टिकुलर एक्सपोजर, लाइट, वो कंडीशन मिलता है ना। अर्ली जैसे विंटर के अंदर, है ना, लेट आफ्टर द 4 o'clock, तो उस टाइम पे येलोइंग टोन आ जाता था। कोई भी फोटोग्राफ क्लिक करो उसके अंदर येलोइंग टोन आ जाता था, तो वो भी एक रहता था। और कुछ जो हर्बेशियस प्लांट है ना, उसके अंदर ये ब्रीजी एनवायरनमेंट भी बहुत ही दिक्कत करता था, क्योंकि अगर फोटो क्लिक करने जाओ उस टाइम पे वो प्लांट वहां पे स्टेडी रहना चाहिए, है ना। अगर थोड़ा भी हिल गया तो ब्लर इमेज आ जाता है, तो वो भी दिक्कत रहता था। तो मेरे लिए ये सारी चीजें फोटोग्राफी के अंदर ये आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग, इसीलिए वी यूज टू, इट इज नॉट ओनली फॉर डॉक्यूमेंटेशन दैट वी यूज टू स्टार्ट अर्ली। जब भी हमें जाना होता था, वी यूज टू स्टार्ट, जैसे सनराइज हुआ, सनराइज के साथ हम टिफिन अपना पैक कर के, बैक पैक्स लेके वी यूज टू गेट इनटू द फील्ड, क्योंकि पता है कि अगर लेट हुआ तो सर की डांट मुझे खानी पड़ेगी कि लेट करवाया एंड ये मेरा टाइमिंग छूट गया, एंड फिर वी हैव टू वेट फॉर अनदर डे, समटाइम्स 10 days, another week, या कभी 1 year। तो वो डांट खाने से अच्छा जल्दी शुरू कर ले। and this is all everything along with our job. यस। अच्छा, अब कभी कभार ना क्या होता है, मैं एक और ऑफ बीट एक बात शेयर करूंगी कि ये जो फोटोग्राफर्स होते हैं, खासकर बॉटनिस्ट एंड टेक्सोनॉमिस्ट, इनकी एक खासियत होती है। अहमदाबाद के ऑटो रिक्शा वाले शायद फिर भी जगह दिखा दें कि पैर बाहर निकालेंगे कि टर्न लेने वाले हैं, इनका कोई भरोसा नहीं। ये बॉटनिस्ट और टेक्सोनॉमिस्ट और फोटोग्राफर उसमें भी हुए, कहीं पे भी फ्लावर रोड पे दिखा, अरे दिस इज इन फ्लावरिंग, ब्रेक, मतलब अनएक्सपेक्टेड ब्रेक लगती है। एंड कभी कभार ये होता है, जैसे मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, हमारे पास बाइक हुआ करती थी, तो हम लोग बाइक पे जा रहे थे, एक दिन प्लांट देख रहे थे सर, एंड देखने देखने में सामने डिवाइडर था, तो रास्ता मैं देखती थी, ये प्लांट देखते थे, तो पीछे बैठ के भी ये फ्रंट संभालना पड़ता था, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एट टाइम्स, नहीं तो एक्सीडेंट होने ही वाला था, उस दिन हम लोग को लगने वाली थी। ऐसे भी काफी सारे एक्सपीरियंसेस हमारे रहे हैं। कभी कभार क्या होता है, यस, ये सबसे बड़ा मेरा इंटरेस्टिंग था। एक दफा मैं इंद्रोला में गया था फोटोग्राफ खींचने के लिए, तो मैं नीचे एक हर्बेशियस प्लांट था, उसका मैं फोटो खींचने जा रहा था उसके करीब, क्योंकि करीब आके मुझे और भी डिटेलिंग मिलता है। और उसके बगल में एक ट्री था। अब मुझे उसका फोटो खींचने थे, मैं उसको तो ओवरसाइट ही किया वहां पे। लेकिन फिर सडनली मेरा ध्यान गया, कुछ चीज वहां पे हिला, और मैंने देखा कि एक पूरा स्नेक वहां पे उसको लपेट के वहीं से नीचे की तरफ बढ़ रहा था वो, और वहीं पे स्टिल होके शायद वो मुझे देख रहा था कि क्या कर रहा है। उसको देख के मैंने धीरे से, विदाउट टेकिंग अ ब्रीथ, है ना, साइलेंटली मैं मूव बैक, स्टेप बैक मैंने किया और वहां से निकल गया। वरना पता नहीं वो, आई इवन डोंट नो कि वो पॉइजनस था, नॉन पॉइजनस, वो भी मुझे नहीं पता चलता है उसके अंदर कौन सा पॉइजनस होता है। लेकिन यस, मैं जब परमिशन लेने वहां पे गया था, तो वहां पे पांडे साहब थे उस टाइम पे डायरेक्टर, तो उन्होंने बोला कि आप फोटो जाओ वहां पे, कोई दिक्कत नहीं है, परमिशन देते, कहीं पे भी तुम अपना व्हीकल लेके जा सकते हो, क्योंकि व्हीकल अंदर अलाउ नहीं था। लेकिन आप पता है आपको यहाँ पे कितने पॉइजनस स्नेक्स घूम रहे हैं और कितने इवेंट्स हुए? मैंने बोला सर मुझे उसके बारे में पता नहीं, तो आप कैसे जाओगे? मैंने बोला अपना ऐसे ही मैं चला जाऊंगा। कि नहीं, आपको वहां पे हॉलबूट पहन के जाना पड़ेगा, कि ये सारे यहाँ पे दिक्कत रहेगा, अदरवाइज आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको वहां पे कौन उठाने आएगा। तो ये सारा झमेला रहा था। मतलब क्या है, शायद वाइल्ड एनिमल्स को भी ये था कि हमारी फोटो भी खींचो, तो वो भी आ गए। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अच्छा, अगला चैलेंज जो हमने फेस किया फील्ड वर्क में, वो था लोगों का पब्लिक एटीट्यूड।
कई बार क्या होता है कि हम लोग सेक्टर्स में भी घूमा करते थे, जो रिजर्व एरियाज थे वहां तो खैर ठीक है कि परमिशन के साथ जाते थे, तो उन्हें पता है कि ये लोग क्या करने आए हैं। बट सेक्टर्स में लोग ऐसे देखते थे जैसे पता नहीं ये कौन सा प्राणी कहाँ से आया है और ये एलियंस क्या कर क्या रहे हैं। So sometimes it used to be really very much difficult explaining them that this is a part of study that we are doing, और उसके लिए हम फोटो खींच रहे हैं, क्योंकि फोटो तो आजकल सब सेल्फी लेते हैं, उस टाइम सेल्फी का इतना ट्रेंड नहीं था, लोग फोटो खींचा करते थे सामने खड़े रह के, और उन्हें बड़ा ताज्जुब होता था कि ये प्लांट की खींच रहे हैं, खुद की तो फोटो भी नहीं ले रहे हैं। तो एक कभी कभार खिल्ली उड़ाना, कभी हंसना, एक नेगेटिव एप्टीट्यूड भी हमने कई बार फेस किया। एट द सेम टाइम ये भी है कि कई बार हमें इतने अच्छे लोग भी मिले थे सेक्टर्स में, हु यूज्ड टू शो देयर पर्सनल गार्डन्स कि अरे आप आइए देखिए हमने ये उगाया है, ये है, दिस इज इन फ्लावरिंग स्टेट, इसका फ्रूटिंग ये है। तो दे वर रियली वेरी मच फ्रेंडली, और उन्हें देख के ये लगता है कि ओके चलो ऐसे भी लोग हैं। इट वॉज वेरी, दे वर रियली वेरी फ्रेंडली। तो ऐसा भी हमें एक्सपीरियंस हुआ है। नाउ वो लोग कई बार क्या करते थे कि बातों बातों में ना हम लोग का टाइम थोड़ा ज्यादा हो जाता था, तो वो एक ड्रॉबैक भी था जिसको हमें ध्यान में रख के चलना था। बट यस, दिस इज हाउ इट वेंट ऑन। नाउ द नेक्स्ट फेज, लाइक सर सेड, कि हमें परमिशन के भी इश्यूज इनिशियली आए थे। इट वाज डिफिकल्ट फॉर अस टू एक्सप्लेन देम दैट for this work we need to have frequent visits. So it is not just a permission for a day, for a week, for a month. We needed permission for a whole year. एक पूरे साल के लिए हमें परमिशन चाहिए। तो इनिशियली कई बार ये होता था कि it was not possible to give permission, या it was not possible for us to explain them that इतने लंबे टाइम के लिए हमें आप परमिशन दो, बिकॉज एक प्लांट है वो आज फ्लावरिंग स्टेट में नहीं है, वो 2 महीने बाद आएगा, तो उसके लिए हमें वी हैव टू वेट। बट बाय दैट टाइम दूसरे 10 प्लांट है जो कि शायद फ्लावरिंग से चले जाएं, तो वी हैव टू विजिट फ्रीक्वेंटली। तो दिस इज हाउ इट वेंट ऑन, एंड कई बार फिर काफ़ी मशक्क़त के बाद परमिशन मिल भी गई। सो दैट वाज ऑल अबाउट अवर field challenges. Now coming to the next part, that was जैसे बोला टेक्निकल इश्यूज। ये जो टेक्निकल डिफिकल्टीज एंड चैलेंजेस हमने जो फेस किए वो शायद काफी डिफरेंट थे। फील्ड को तो फिर भी हम समझ लिए, जब बात आई वेबसाइट डेवलपमेंट की तो बिल्कुल ऐसी ही कंडीशन हमारी थी कि अरे ये क्या करेंगे, कैसे करेंगे। मतलब हमें कोडिंग भी करना है, हमें ये भी पता चला कि वी नीड अ डोमेन स्पेस, वो हमें खरीदना पड़ता है, जो आज तक हम खरीद रहे हैं ऑफ कोर्स। अभी तो फंड रिसर्च प्रोजेक्ट खत्म हो गया, गुजरात फॉरेस्ट रिसर्च फाउंडेशन ने फंडिंग किया था, बट वो प्रोजेक्ट खत्म होने के साथ वो डोमेन स्पेस भी चला गया। पर एवरी ईयर वी हैव टू, हम अपना पॉकेट से पैसा डाल के वो डोमेन एवरी टाइम वी टेक दैट स्पेस, क्योंकि अदरवाइज ये सारा डेटा चला जाएगा, ये वेबसाइट कहीं एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो काफी नई नई चीजें हमें जानने को मिली, तो वो भी एक बड़ा चैलेंज था कि अरे डोमेन के लिए क्या करेंगे, कैसे होता है। इट इज लाइक योर मेडिक्लेम है ना। Yes. आपको हर बार उसको रिन्यू करवाना पड़ेगा, अगर रिन्यू नहीं करवाएगा तो वो लैप्स हो जाएगा, Yes. सारा एडवांटेज भी उसके निकल जाएंगे। Yes. तो बेनिफिट्स भी आपको जो मिलता है वो नहीं मिलेगा। और यहाँ पे एक बार डोमेन चला गया तो वो डोमेन आपको नहीं मिलेगा। अगर नया डोमेन मिला तो वो फिर से जीरो से स्टार्ट सब होता है, बैक डेटा Yes. सारे सब चले जाते हैं, और उसके वो प्राइसेस भी अपने मुताबिक फिर लेते हैं Yes. कि इनको ये अभी यहाँ पे इसको बहुत ही जरूरत है, दिस इज अ मार्केट। Yes. तो उसके अंदर तो आपका जितना लगता है सामने वाले को पता चलता है कि ये उसका ड्रॉबैक है, तो फिर वो पकड़ के लेगा आपसे। Yes. तो वो एंड देन डिजाइनिंग, तो हमको ये लगा कि मुश्किल टास्क है, बट हमने एक ही चीज पकड़ के रखी कि नहीं, टुगेदर वी आर देयर टुगेदर एंड वील डू इट टुगेदर। तो विद दैट नोट हम आगे बढ़ते गए, जो चैलेंजेस आती गई, जैसे आती गई, वी स्टार्टेड मूविंग फर्दर। अब वो डिजाइनिंग वगैरह में काफी वक्त हमारा लगा, बिकॉज हमें उसे जो काम लेना है इट हैज टू बी प्रॉपरली परफेक्टली
फिर बात आई कंटेंट डेवलपमेंट की, उसमें काफ़ी सारा आई वुड से कि मुझे काफ़ी सारे ग्राफ बनाने पड़े, मुझे काफ़ी सारे टेबल्स बनाने पड़े, बिकॉज एक सेक्टर का मेरे पास सिर्फ लिस्ट है, तो मैं सिर्फ नोट पैड लेके सर के साथ साथ चला करती थी, वो जो बोलते थे आई यूज टू राइट। फिर उसको मुझे एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना पड़ा, जहाँ आई यूज टू हैव देम इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स सो दैट आई कैन गेट द क्रक्स आउट ऑफ इट। तो उसमें काफ़ी वो इटसेल्फ बड़ा चैलेंज था। अब हमने जब वेबसाइट डिजाइनिंग की और वो सब हमने बेसिक फॉर्मेट रेडी कर लिया, तो वी वांटेड दिस वेबसाइट इन अ फॉर्म दैट इट शुड बी डायनामिक। Now at this point I would say that there are two types of websites. एक static होता है wherein you cannot make any changes further, and दूसरा होता है dynamic, जहाँ की ये system हम used to है इससे कि hyperlink रहेगा, we click on the hyperlink and it takes you to another page. तो like that we wanted our website to be dynamic. उसके लिए हमने बहुत भेजापिद्दी की थी, हमने बहुत मतलब जो टेक्निकल सपोर्ट हमने लिया था उसके साथ वी नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन एनी ग्राउंड। वी वांट समथिंग व्हिच हैज टू बी डन इन अ पर्टिकुलर वे। तो हर टैब वो करेक्टली लोकेट होना चाहिए, इधर से भी खोले तो भी आना चाहिए, इधर से भी हो, कहीं से भी अगर वो प्लान पे क्लिक किया जाए तो इट शुड कम बैक टू दैट पॉइंट करेक्टली, प्रिसाइजली, परफेक्टली। सो वो हमारे लिए एक टेक्निकल चैलेंज काफी बड़ा रहा। अब बैकअप मैनेजमेंट, धीरे धीरे, इनिशियली तो कोई दिक्कत नहीं थी, ये हमारे फोन्स जैसा है। फोन में शुरू में तो सब डेटा आता जाता है, हमें स्पेस का प्रॉब्लम नहीं होता है। धीरे धीरे प्रॉब्लम आने लगती है, फोन हैंग होते हैं, एंड कभी बार ये भी होता है स्टोरेज, जीमेल का स्टोरेज खत्म हो गया, यू बाई इट। तो और सेम चीज यहाँ भी होने लगी। तो we had to keep a backup management also. Storage as well as backup management was also required, क्योंकि अगर फोटो चला गया, वो रेयरली अगर क्लिक्ड फोटो मोमेंट अगर चला गया, तो फिर नेक्स्ट ईयर, थर्ड ईयर, और जब हमारी डेडलाइन अप्रोच करती है तब हम सब काफी हाइपर एक्टिव होते हैं, हमारा स्टेट ही कुछ अनदर लेवल का होता है। तो उसके लिए हमने अलग अलग जगह काफी कॉपीज रखी, सर ने हार्ड डिस्क खरीदी, हम 2-3 कॉपीज रखा करते थे। तो और याद रखना पड़ता था कि इसका बैकअप लिया है, ये नए का नहीं है, तो एवरी टाइम उसको करेक्ट टाइम पे बैकअप के लिए छोड़ना, रखना। जब भी फील्ड में जा रहे हैं उसके पहले कैमरा का जो स्टोरेज है उसका सारा बैकअप 2-3 जगह रख लेना, एम्प्टी करके जाना, कार्ड्स इनफ रखना, वो सब बहुत मैटर किया। ये एक और चीज जो हमने फेस की ड्यूरिंग अपलोडिंग। लास्ट सेगमेंट हमारा लास्ट फेज चल रहा था। अब अपलोडिंग के लिए हम लोग फिर तो घर पे ही हम लोग को काम करना, सुबह से बैठ जाते थे रात तक। तो उसने बताया था कि आज रात 12 बजे से पहले हम लोगों को ये अपलोड कर देना है। तो हम लोग कुछ 9, 9:30 के बाद 10 बजे के आसपास, हमारे सामने उस टाइम पे समर चल रहा था, सब जगह पे एसी चालू थे, तो हमारे साइड में मेन डिस्ट्रीब्यूशन जो पॉइंट था वहां पे कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ। और शॉर्ट सर्किट तो क्या, वहां पे पूरा ब्लास्ट हुआ वो। और सारे एरिया की सब जगह पे लाइट चली गई। और वो लैपटॉप में जितना चार्जिंग था उतना हम लोग फटाफट मैनेज किया, थोड़ा बाकी रहा, यहाँ से सीधा वाइंड अप करके चालू लैपटॉप करके हम लोग उस गाड़ी के अंदर बैठ गए, मेरी सिस्टर इन लोग के घर पे गए वहां पे, और वहां पे बाकी का हम लोगों ने मैनेज किया 12 बजे से पहले, और फिर आराम से लेकिन वो टाइम जो था, एवरी मिनट काउंट्स, एवरी सेकंड काउंट्स, जो हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारी सोसाइटी के अंदर लाइट बंद हो जा रही थी हमारी लास्ट में, लेकिन लोग नीचे बोल रहे थे कि अपना भी बंद होने वाला है अब तो कुछ ही टाइम के अंदर। जो टेंशन हुआ था बहुत हुआ था, सारा ब्लास्ट, यानी बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। ये ऐसा चैलेंज था जिसको मतलब कोई नाम नहीं हम दे सकते, लेकिन यस वो टेंशन हमने फेस किया था। लास्टली जो दिस इज ऑलरेडी सेड कि डोमेन रिन्यूअल का चार्ज लगता है, एंड दैट अगेन इज चैलेंजिंग क्योंकि इसका कोई तोड़ नहीं है। ये एवरी ईयर यू हैव टू गेट इट रिन्यूड, यू हैव टू, वी आर पेइंग द फीस फॉर दिस एवरी ईयर, एंड ये कराना पड़ता है, अदरवाइज इट वोंट एग्जिस्ट। सो इट इज नॉट जस्ट के प्रोजेक्ट खत्म हो गया एंड इट्स ऑन द नेट एंड डन। No, we are paying for the place that we are using. We are actually paying charges for that. तो ये भी एक challenge है।
लेकिन ये सब मेहनत के बाद, ये सब चैलेंजेस के बाद जब हमने फीडबैक्स हमारे पास लोगों के आते हैं, तो वी सो फील हैप्पी अबाउट द फैक्ट दैट वी हैव अ वेरी वाइड रेंज ऑफ पीपल हु विजिट द वेबसाइट. कुछ फिजिक्स के भी हैं, लाइक आप देख सकते हैं, कुछ लोग फिजिक्स के हैं, कुछ बॉटनी के तो ऑफ कोर्स करते हैं, स्टूडेंट्स करते हैं, होम मेकर्स भी करते हैं. फिर ये जो है, ये बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, उन्होंने इंजीनियरिंग कर रखी है बट स्टिल वो विजिट करते हैं. रिटायर्ड जनरल मैनेजर ओएनजीसी के हैं. ये कुछ जो फीडबैक्स हमें मिले हैं वो मैंने यहाँ पे शेयर किया है. सो ये हमारा बूस्ट है कि यस, चलो हमारी जो मेहनत है वो लाइक सफल है. So do visit the website. Do drop in your feedbacks because they are really valuable to us. Whatever you feel like, जो आपको लगता है, but please do share your feedbacks. So with that note, we would like to end. Thank you very much. We can. Uh, I hope that I have not taken But yes, more time. We can take No, it's one or two perfect. sessions. It's fine. Yeah, it's perfect. I think your session, has motivated so many researchers, and this will be like a guiding light, for the others to take up similar projects and do this again and again and again. So you have addressed Gandhinagar, but I think we have a larger picture still remaining. Go back to Yes. Ahmedabad and then Gujarat and so on. So maybe Yes. we can identify people who can actually do it, in small, bunches or groups Yes. can address. Yes. Yes. Great, Yes. very great. It was very nice to listen to you. Over to you, Anil. Thank you so much to Maulik sir and Goral ma'am for delivering such an informative talk. On behalf of the department, I thank Maulik sir and Goral ma'am for sparing their valuable time for us. Let me see if there are any questions from our participants. We don't have any question as of now, but Okay. if participants have any questions, they can ask in comment section, and our resource persons will definitely try to answer them all. Now I request Solanki sir to address the formal vote of thanks. Over to you, sir. Thank you, Anal. Uh, Good afternoon to uh, all of you. Good afternoon to Honorable Vice Chancellor, Sir, Registrar, Sir of Gujarat University, our respected Head of Department, Archana Madam, invited guest, and my staff members and my dear students. First of all, I would like to thank our Vice Chancellor, Sir, for always helping us in this kind of activities. Thank you, sir. I also like to thank our registrar, sir, for his constant encouragements. I would like to thank our HOD, ma'am. Ma'am, you give me an opportunity to speak on this auspicious occasion, and it is a matter of honor for me. On behalf of entire institute, that is Gujarat University, I would like to thank our both the speakers, Dr. Maulik Gadani and Dr. Goraljani. This webinar cannot be complete without your in-depth work, presentation, and uh, the inspiring words for budding botanist. I thank you, both of you, from bottom of my heart. I also want to express my heartful gratitude to all the staff members of Gujarat University, Botany Department, Climate Change, and Bioinformatics. I'm also thankful to Dr. Professor Bharat Maitreya, uh, Dr. Nainesh Modi, Dr. Shaumya Patel, teaching associate and teaching assistant for their valuable support. I would also like to thank the students, committees, and the support staff, uh, Mr. Sagar Panchal and Sanyam from GUSEC for the complete presentation of this program, and Director Rolwala for helping in live streaming of this webinar. Thank you, In sir. this such a short time, sir, you have made the best arrangement
for this program. It's in a Thank club. you. Thank you. Thank you, Anal, for anchoring this webinar very nicely. And finally, I would like to say Guru Brahma, Guru Devo, Guru Maheshwara, Guru Shakshat Parabrahma, Tashmai Sri, Guru Ve Nama. Thank you very much to all of you. Thank you, sir. As botanists, we all know the value of a flora. Today, we had a new perspective of the same. I once again thank you all for joining in this invited talk. The feedback link is on the screen. Please fill it up and get your e-certificates. Thank you. With this, we come to the end of the session. Thank you. Thank Thank you. Thank you you. so much for Thank giving you. us this nice Pleasure. opportunity. Sure. Thank you. Thank you so Thank much. you, sir. Yeah, it's really an insightful talk. Thank you, Well, sir. thank you. Thank you so much. Thank you.